Assalamu alaikum, dear students of class 12th. I am Manzoor Ahmad Dar, lecturer English Government Boys Higher Secondary School, Langit. Since you know, we are doing the book Flamingo and we were reading the lesson number 6 of the book Poets and Pancakes. And this Poets and Pancakes is an extract taken from the book My Years with Boss, written by S.S. Watson. This is all about the life history, the way of life of those people working with cinema in 1940 and around. Dear students, today we will read the second paragraph of page 62 from the book Flamingo. Gemini Studios was the favorite haunt of poets like S.D. Yogyar, Sangu Subramaniam, Krishna Shastri, and Harindranath Chattopadhyaya. As you know, this lesson is all about the Gemini Studios, and since it was a working place for those uh, heroes, heroines, actors, producers, directors, and it was also an interesting place for writers, for literary persons of that time. Among those who visited Gemini Studios often was S.D.S. Yogyar. As you know, S.D. Yogyar was a freedom fighter and a national poet. Sangu Subramaniam was there, Krishna Shastri. About Krishna Shastri, I shall tell you that he was known as the Shelley of Andhra. As you know, P.B. Shelley is the famous poet of British. He's a Dubliner, and like we call Rusulmir, the John Keats of Kashmir. So people of Andhra call this Krishna Shastri as Shali of Andhra. And there is also Harindranath Chattopadhyay who often visited the place. Harindranath Chattopadhyay was an Indian English poet. You know, he was a dramatist, an actor, a musician, and also the first Lok Sabha member from Vijayawada constituency. It had an excellent mass, means Gemini Studios had an excellent mass. Mass is often a place where from the meals are being supplied, uh, which supplied good coffee. But here it has been humorously used, it supplied coffee only at all times of the day and for most part of the night. Those were the days when Congress rule meant prohibition, and meeting over a cup of coffee was a rather satisfying entertainment. Those were the days of when there was the meetings were not allowed, and so people would meet at a cup of tea, and that was their entertainment because there was uh, prohibited the meeting or gathering. Barring the office boys and a couple of clerks, everyone else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. चंद आदमियों को छोड़कर बारिंग द ऑफिस बॉयज या कुछ क्लर्क्स को छोड़ के बाकी सब जो है अपना जो बचा हुआ टाइम होता है फुर्सत के लम्हात इस स्टूडियो में गुजारते थे क्योंकि वो पोइट्स बनना चाहते थे और पोइट्री के लिए वो इस चीज़ को ज़रूरी समझते थे कि हम यहाँ पे मिलते रहें. Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that, they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. People, I shall say, blindly believed in Gandhiji at that time and they worshipped him. They made him the role model, and beyond that, they were not taking any
active part in the politics. Naturally, they were all averse to the term communism. When we say we talk of Gandhiji, we talk of our Indian culture, it was always hostile towards communism. So these people who uh, believed themselves to be the followers of Gandhiji were hostile towards communism. Communism उनको पसंद नहीं था. A communist was a godless man. जैसा हम भी कहते हैं कम्युनिस्ट वो होता है जो जिसका खुदा नहीं होता है, जो खुदा को नहीं मानता है. He had no filial or conjugal love. Filial or conjugal love will mean an affection towards the parents and affection between the two brothers and affection among the siblings. भाई बहन में जो प्यार होता है, माँ बाप के लिए बच्चों का जो प्यार होता है उसको फिलेल या कंजुगल लव कहते हैं. और ये कम्युनिस्ट के अंदर नहीं होता है. पीपल बिलीव दैट he had no compunction about killing his own parents or his children. अगर वो अपने बच्चों को भी मारे, अपने पेरेंट्स को भी मारे, उसके पास नदामत नहीं होती है. फिर कंपंक्शन. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. ये कम्युनिस्ट के बारे में ख्याल था. He was always out to cause. वो हमेशा उसका मतलब यही था कि वो बेचैनी फैलाए, spread unrest and violence, और वायलेंस फैलाए among innocent and ignorant people. मासूम और बाकी लोगों के बीच. Such notions, which prevailed everywhere else in South India at that time, also naturally floated about vaguely among the khadi clad poets of Gemini studios. ऐसे ख्यालात जो उस वक़्त बिल्कुल आम थे जनूबी हिंदुस्तान के लोगों में, कुदरती बात है ऐसे ही ख्यालात बहुत ही अ, क्या कहूँगा मैं, वेगली, जैसे बहुत ही क्लियर तरीके से नहीं, इन खादी पहनने वाले जमनी स्टूडियोज़ के शायरों में भी चलते थे. यहाँ पे एक किस्म का एक मजाक है कि शायरों को पता होना चाहिए था कम्युनिज्म के बारे में. जो गांधीयन ड्रेस लगाते थे, अपने आप को पढ़े लिखे कहते थे, वो भी कम्युनिस्ट्स के बारे में ऐसे ही ख्यालात रखते थे. एविडेंस ऑफ इट वाज सोन फॉरथकमिंग. जल्द ही इसका सबूत आने वाला था. When Frank Bachman's small rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometimes in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. Someone called the group an international circus. यहाँ पे हमने इस ये फ्रैंक बचमैन की तरफ जाना होगा. फ्रैंक बचमैन जो है, ही वॉज एन अमेरिकन जो 1878 में पैदा हुआ और 1961 में मर गया. वो उसने एक जो है एक बैन अक़वामी तहरीक शुरू की जो रूहानी तारीख थी और जो इखलाकियात पर जिसका दारोमदार था, इखलाकियात जिसकी बुनियाद थी. तो जाहिर सी बात है जब कम्युनिस्ट्स के बारे में ये ख्याल था दुनिया में, तो ऐसा आदमी जो रूहानी तसव्वुर को लेकर आए, अखलाकियात के फैलाव के तसव्वुर को लेकर आए, तो उसके लिए एक पुरजोश खुशामद कहना मद्रास में जो है कोई गलत चीज़ नहीं था. They could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. तो जेमिनी स्टूडियोज़ के अलावा उनको गर्म जोशी से शायद कहीं इस्तेकबाल नहीं किया जा सकता था. Someone called the group an international circus. किसी ने कहा ये तो बैनुल अक़वामी सर्कस है. They weren't good on the trapeze and their
acquaintance with animals was only at the dinner table, but they presented two plays in a most professional manner. वो लोग जो है उन्होंने उस वक़्त 2 जो है ड्रामा पेश किए बहुत ही पेशेवराना तरीके से जर्मनी स्टूडियोज़ में। देयर जोठम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, ये दोनों ड्रामा के नाम है। रैन several shows in Madras and along with the other citizens of the city, the Jimny family of 600 saw the police over and over again. इन दोनों पुलिस को मद्रास में दूसरे शहरियों के अलावा जमुनी स्टूडियोज के 600 लोगों ने बार बार देखा। The message of the police was usually plain and simple, homiles. और जो इसकी मैसेज थी प्लान की बिल्कुल सिंपल थी और बिल्कुल जो है अंडरस्टैंडेबल थी, बट द सेट्स एंड कस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। सेट्स जो जहाँ पे लगे थे और जो कस्ट्यूम्स पहने थे वो बहुत ही उम्दा किस्म के थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jatham Valley, with a weird stage, a white background curtain, and a tune played on the flute. इस इनकी इन प्ले से, इनके इन ड्रामा से मद्रास की जो ड्रामा कम्युनिटी थी वो बहुत गहरे हद तक उस पर असर पड़ा इसका, और बहुत ही जो दिनों तक इसका इतना असर रहा कि जुथाम वैली में शाम को ये ड्रामा लगते थे, यानी शाम को एक ओपन स्टेज पर ये ड्रामा चलाए थे। सीन सनराइज एंड सनसेट इन द मेन ऑफ जथम वैली विद अ बेयर स्टेज, अ वाइट बैकग्राउंड कर्टन एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट। तो ये ड्रामा जो है जिस तरीके से शुरू हो जाते थे सुबह शाम को बहुत दिनों तक इसमें चला मद्रास की जताम वैली में। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big boss of Madras like Mr. Watson simply put it into their hands.